Hello everyone, I Dr. Prakash Chandra from Chemistry Department, Bundelkhand University, Jhansi. Today I will discuss about laws of thermodynamics which is beneficial for undergraduate BSc students and as well as PG student. Thermodynamics is made up of two terms. Basically, one thing is that thermo and another one is the dynamics. These two terms indicates in about the thermodynamics. Thermo means heat and dynamics means movement. And it means this indicates that the flow of heat. It means thermodynamics means flow of heat. We are discussing here the thermodynamics or this terminology which can be discussed in about the first one is that key system. First one is system. What is system? System is the part of the universe which is bounded by a surface. Suppose this is the system, this can be bounded by any surface like that, and another part is the surrounding. Surrounding is the outside the system. The part except system of the universe is known as surroundings. Or there are different type of system. There are different type of system just like open system, closed system, and another one is isolated system. Open system, it means ki when energy like that, this is the system, if energy and matter, energy transform from system to surrounding and matter is also transformed from system to surrounding, such type of system are known as open system. Another one is closed system. Closed system, it means suppose this is the system, in that case if energy is transformed from system to surrounding, and matter does not transform from system to surrounding, such type of system is known as closed system. And third one is isolated system. In the case of isolated system, it means ki neither energy enter the system nor leave the system. It means that is energy not transform from system to surrounding as well as matter not transform from system to surrounding. Such type of system are known as isolated system. There are different thermodynamic process. Which are used, very important process which are used in laws of thermodynamics. So, first one is isolated system. Isolated system, it means ki temperature constant, that is dt is equal to 0. Such type of system is known as isolated system. Second one is isobaric system. It means ki the system in which pressure constant, that is dP is equal to 0. Such system are known as isobaric system. Third one is isochoric system. Core means volume. Therefore, such type of system is known as isochoric system. Iso means same. It means if volume constant throughout the system, such system are known as isochoric system, that is dV is equal to 0. And last one is the most important terminology which is used in the thermodynamics, that is adiabatic. Yani heat neither enter the system nor leave the system, that is heat constant. So, these are the thermodynamic system which is used in the basic terminology. Without these system which cannot be defined the laws of thermodynamics. And the other is that ki thermodynamic function is defined as there are two type of thermodynamic function. One is state function
and another one is path function. This is also very important properties of the thermodynamics. State function, it means suppose the system is that here is the point A and another is point B. If the system, if the function depend on initial and final state of the system, if the function depend on initial and final state of the system, such type of system is known as state function. Yeah, exact function, another way. Second one is path function. Path function, it means ki suppose there are different path like that there are different path 1, path 2 and path 3. ठीक है. If you moving from one path to that of the another path, ठीक है, first to second to third, so there are different heat and different do the work during the change from A to B. So path function are those function which depend on the path of the system from A to B, first path, second path and third path. This is the path function. These are the basic terminology used in the laws of thermodynamics. Now come to the our presentation. Objective of thermodynamics. Objective of thermodynamics, it means ki to predict the feasibility of a process. It means कि किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या है, किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या हो सकती है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, दैट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड वन इज द टू एस्टिमेट द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट. थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि वो यील्ड मिलेगा, लेकिन वो किस रेट से मिलेगा इसके बारे में नहीं बात करता है. तो यील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन करता है कि कितना प्रोडक्ट हमको मिलेगा. दैट वन इज द गिव द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. एंड next one is the deduce some important relationship in physical chemistry like Raoult's law, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point. These are the different relation which are deduced for use in different thermodynamic properties. ठीक है. And next one we are going to start laws of thermodynamics. First one is the zeroth law of thermodynamics. Basically zeroth law of thermodynamics statement ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद में दी गई थी, लेकिन जो इसका कंसेप्ट था दिस इज द प्रीवियस इनिशियल कंसेप्ट ऑफ द, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट के पहले के कंसेप्ट के बारे में बात करता है. इसीलिए हम इसका नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब था कि जब इफ ए सिस्टम ए is thermally equilibrium to that of the system B. System A is thermally equilibrium to that of the system B, and the system B, if two objects B and C both are thermally contact to each other, then system B is thermally equilibrium to that of the system C. So therefore the system A is thermal equilibrium to that of the system C. This is known as zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics based on the thermal equilibrium of the system. And now come to the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy. Law of conservation of energy, it means energy neither be created nor be destroyed, it can transform one form to that of the another form. So therefore this law of conservation of energy is defined by the in terms of mathematical formula delta E is equal to Q plus we are discussing here. So here is the system once if is a closed system, a system is a constant volume, and if heat is added to the system, therefore the internal energy of the system is increases because of the constant volume of the system, so that the final energy is equal to that of the ui plus q. Ui plus q, it means the energy of the system is increases. And another concept is that if the open system,
अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो हमें ये पता है, मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजी की बात किया। तो अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो दिस इज द पिस्टन, दिस इज द गैस फील्ड इन द सिलेंडर। तो अगर हम इस पिस्टन हमारा इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ इसमें वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर क्या था कि वॉल्यूम फिक्स था, यहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा, तो जो हमारी एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जबकि पहले केस में एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, तो इन दैट केस यू एफ इजिकल टू यू आई माइनस वर्क, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ वर्क हमको हो जाएगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वन इज दैट कि सपोज मान लो कि पिस्टन वर्क कर रहा है, तो उस आधार पर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू दैट ऑफ द अनदर फॉर्म, हीट एंड वर्क। दिस इज द लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दिस इज द कंसेप्ट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ गैस फील्ड इन अ सिलेंडर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगर हम इसको कंप्रेस करें, इस सिलेंडर को कंप्रेस करें, तो जैसे जैसे हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ हीट क्या करेगा, आउट फ्रॉम द सिस्टम। एंड अनदर वन केस, इफ द वॉल्यूम इज इंक्रीजेज, इफ द पिस्टन रिलीज द प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीजेज, दैट इज हीट इंटर इनटू द सिस्टम। तो दिस लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is very basic explanation and very basic example which are daily life में हम देखते हैं कि यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो जैसे हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो अगर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम जैसे लाइट जल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू द लाइट एनर्जी। अगर फैन चल रहा है तो हमको मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू हमको हवा मिलता है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड अनदर वन इज दैट, अनदर एग्जांपल इज दैट कि सपोज अगर देयर इज नो वर्क डन, इट मीन्स कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज वी नो दैट वर्क डन W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो dV की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पर देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P डेल्टा V हमारा है, तो यानी डेल्टा V हमारा अगर कांस्टेंट हुआ तो जीरो हो जाएगा, तो W हमको क्या मिलेगा, जीरो। तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम अगर कांस्ट हो, अगर हम कांस्टेंट होगा तो किसी सिस्टम को हम अगर हीट देंगे तो उसकी केवल एंड केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, वर्क हमको जो मिलेगा यानी चेंज इन वॉल्यूम। किसी भी सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर जैसे ये हमारा पिस्टन है, अब इस पिस्टन में हमने क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम हमारा ये था यहाँ तक, और जैसे एक्सपेंड करेगा तो फाइनल वॉल्यूम हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इन दैट केस वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम वी आई टू दैट ऑफ वी एफ। तो देयर इज समथिंग वर्क डन occurs in the process from initial volume to that of the change in the volume from initial to that of the final. And this using this we have to find out the work done of the system, that is W is equal to NKT ln Vf upon Vi, or we can say that in terms of gas constant nRT ln Vf upon Vi. This is the work done for isothermal expansion of ideal gases. And this is happening when of the PV curve. PV curve, it means कि at constant pressure when we change from initial volume to that of the final volume, this work will be obtained from the system. अब जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें अब उसके बाद ज़रूरत पड़ती है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड क्या थी? What is the need of second law of thermodynamics? It means कि what is the limitation of first law of thermodynamics? यानी जहाँ पर हम ये बात करते हैं, जहाँ पे हम पाथ की डिफाइन नहीं करते हैं, पाथ फंक्शन की बात नहीं करते हैं, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन की बात नहीं करते हैं, तो और दूसरा हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन के लिए
किसी भी रिएक्शन के लिए जब हम कोई भी रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं तो वो रिएक्शन हमारा क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। तो लेकिन जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है कि ये स्पॉन्टेनिटी को बताता है। इट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क विदाउट एनी compensation. This is the second law of thermodynamics. Or in that case, there are different example to define the second law of thermodynamics. Mathematically, second law of thermodynamics is defined as कि delta S is equal to Q plus T, Q by T. Delta S is equal to Q reversible by T because of it tells in about the spontaneity of the reaction. It is impossible to convert total heat into work without any compensation. बिना कुछ खर्च किए हम ये असंभव है कि हम पूरा का पूरा एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर लें। तो the first example is Carnot engine. In the case of Carnot engine, there are two reservoirs. One is hot reservoir and another one is cold reservoir. At heat engine, at high temperature reservoir give the work the QH amount to the engine and this convert into the work done. So this the efficiency of the heat engine is find W upon QH. Another one is the refrigerator, air condition, heat pumps. While heat flow from spontaneously from higher temperature to that of the lower temperature, we know that potential flow from higher potential to that of the low potential. That's why heat temperature higher to that of lower temperature, it can be made from flow the other way. It work is done on the system. Refrigerator, air conditioner, heat pumps all use work to transfer from cold reservoir to that of the hot reservoir. ठीक है, तो we are discussing here the comparison of heat engine and to that of the refrigerator. In the case of heat engine, work from higher temperature, first reservoir is from higher temperature to that of the cold reservoir. It compared the heat engine and refrigerator. We see that the refrigerator is basically and heat engine running backward direction, from like that heat is coming to the engine and towards the हमें वर्क मिलता है। बट जबकि हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में वर्क देते हैं और फिर हमारा क्या होता है, कोल्ड रिजर्वायर टू दैट हॉट रिजर्वायर की तरफ हमको फ्लो मिलता है। तो ये हीट इंजन के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। एंड अनदर वन इज एयर कंडीशन. एयर कंडीशन इज इसेंशियली आइडेंटिकल टू अ रेफ्रिजरेटर. The cold reservoir is the interior of the house or other space being cooled, and the hot reservoir is outdoors, exhausted and air conditioner within the house will result in the house becoming warmer. Just keeping the refrigerator door open will result in the kitchen becoming warmer. And last one is the heat pump. Heat pump also reverse to that of the heat engine. Basically heat pump is the same as that of the air conditioner, and with that of the reservoir is reverse from this is work from cold reservoir to that of the hot reservoir. So note that the work of the pump does actually contribute to the described result from low temperature reservoir to that of the hot temperature reservoir. तो conclusion is that कि हीट इंजन जो हमारा होता है वो हॉट रिजर्वायर टू कोल्ड रिजर्वायर की तरफ वर्क करता है और हमको वर्क मिलता है, जबकि रेफ्रिजरेटर, पंप और एयर कंडीशनर दीज आर वर्क रिवर्स टू दैट ऑफ द हीट इंजन, हमारा लो टेम्परेचर टू दैट ऑफ द हायर टेम्परेचर की तरफ वर्क होता है. तो दिस इज द बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच आर डिस्कसिंग हियर टुडे, एंड I think this topic is beneficial for all the students which are studying in undergraduate BSc student as well as MSc chemistry student. Thank you.